दोस्तों, सजनी शिंदे का वायरल वीडियो जो 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई, उस फिल्म का रिव्यू करते वक्त मैंने सोहम मजुमदार की एक्टिंग के बारे में यह कहा था दैट ही इज सच अ नेचुरल एक्टर दैट इन अ वे ही रीडिफाइंस नेचुरल एक्टिंग। इस फिल्म के अलावा कबीर सिंह में आपने इन्हें देखा, धमाका में देखा और इस हफ्ते रिलीज होने जा रही पिप्पा में भी देखेंगे। और आज यही नेचुरल एक्टर हमारे स्टूडियो में है। सो लेट्स वेलकम सोहम मजुमदार। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू सो मच सर। सोहम, इतनी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं आप। सीखी है एक्टिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग? सर थिएटर किया है, 11 साल से थिएटर किया मैंने। 2011 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक थिएटर ग्रुप था हम लोगों का, मैड अबाउट ड्रामा बोल के। इन कैलकाटा? क्योंकि आप कलकत्ता के हैं। एग्जैक्टली। सो 2011 से मैं और मेरे 2 दोस्त वी स्टार्टेड दिस थिएटर ग्रुप एंड वी ट्रैवल द वर्ल्ड। तो हम लोग काफ़ी जगह जाते थे। पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म किया हम लोगों ने। सो व्हेन वी परफॉर्म एट पृथ्वी, हम लोग को लगा कि यही करना है जीवन भर, बिकॉज वो थिएटर का ना एक अलग मज़ा है। पृथ्वी थिएटर का एक साइलेंस है जो मैं समझा नहीं सकता किसी को। जो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया, हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, आई वॉज स्टडिंग इंजीनियरिंग, आई फिनिश्ड माई कोर्स, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यही करना है। यू नो, आई डिड नॉट नो वेदर आई एवर बी एबल टू एक्ट इन फिल्म्स, बट हमेशा से इच्छा थी कि एक्टिंग ही करेंगे, यू नो, टू एंटरटेन पीपल टू। और आपके वो 2 फ्रेंड्स? वो अभी भी है, आई मीन दे आर एक्टिंग इन बंगाली फिल्म, सम ऑफ देम। उनके नाम? शोमो, शोमेंद्रो। So we both 3 of us, we were called mad people, so that's why we named our team Mad About Drama. हम लोग स्कूल से साथ में थे, बट कॉलेज में आके वो थिएटर ग्रुप चालू किए। मगर स्कूल में ड्रामेटिक्स में हिस्सा लेते? ऑफ कोर्स मैं स्कूल में बैंड में भी था, मैं गाता भी हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा। तो हाँ, वो स्कूल में बैंड में हो जाने से क्या होता है, लाइमलाइट हमेशा आपके ऊपर था, यू नो, एंड यू डिड नॉट हैव समथिंग कॉल्ड स्टेज फ्राइट जो बोलते हैं। सो उसमें से क्या हो गया, हम लोग का कॉमन मिनिमम बन गया थिएटर, जो हम तीनों एक साथ करते थे। वो दोनों डिबेट्स पे जाते थे, मैं बैंड कॉम्पिटिशन्स में जाता था, और कलेक्टिवली हम लोग थिएटर करते थे। एंड कलेक्टिवली आप लोग मैड पीपल थे। मैड पीपल। तो ये मैड अबाउट एक्टिंग, मैड अबाउट ड्रामा, नो मैड अबाउट एक्टिंग, वो बग मतलब मैड अबाउट एक्टिंग कब हुए? सर बचपन से सर। तो आपके फैमिली में कोई? नहीं, कोई भी नहीं है, दूर दूर का रिश्तेदार कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं है, बट मतलब बचपन से मैं बहुत फिल्में देखते आ रहा हूँ। आपका शो देखा है, शाहरुख खान की फिल्म्स देखा हूँ मैंने। सो क्या होता था, वेन एवर देर वॉज अ टाइम दैट आई गॉट, आई यूज्ड टू गो इनसाइड द वॉशरूम, ये मिरर देखता था एंड आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ, मतलब कुछ भी डायलॉग्स बोलता है, and I felt like I'm doing good only. Wow. And you know, there are kids who feel very shy when their moms ask them to perform in front of relatives or something like that. I was not one of those kids. I used to love it. I used to sing Bengali songs. I used to dance in Ik Pal Ka Jeena and all of that. Of course, I'm not that great a dancer as Ritik sir is, बट कहने का मतलब है कि यू वर अ परफॉर्मर। I always felt like there should be a smile on your face if you're looking at me, and I hate people getting bored. लवली। और फिर कलकत्ते में तो आपने ऑफ कोर्स बंगाली फिल्में की। एक किया था बिफोर, एक ही किया था बिफोर आई मूव टू बॉम्बे टू। एक्चुअली मैं बॉम्बे आया था एक म्यूजिकल करने सर। ये डिज्नी का एक म्यूजिकल हुआ था, अलादीन नाम। यस, मैंने देखा है। आपने देखा है? तो मैं उसमें था। आई वॉज वन ऑफ अलादीन्स फ्रेंड्स, जो भूखा रहता था हमेशा। बैपकैक नाम था उसका। अच्छा। सो मैंने उसके लिए मैं वो बॉम्बे आया था। क्या नाम था उसका? बैपकैक। अलादीन जो प्ले था उसमें, वो प्ले में ना वो अबू नहीं रहता है, द बंदर इज नॉट देयर, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फ्रेंड्स ऑफ अलादीन। अच्छा। सो आई वाज वन ऑफ दोज फ्रेंड्स। सो उसके लिए मैं बॉम्बे आया, हम लोग का पूरा रिहर्सल चला 5 महीने का, एंड आई वाज सपोज टू गो बैक ओनली। ऐसा प्लान नहीं था कि बॉम्बे में ही रहना है, स्ट्रगल करना है एज एन एक्टर और समथिंग। आई नो मेरा एक थिएटर ग्रुप वापस कैलकाटा में है, तो उधर वापस जाएंगे ये प्ले ख़त्म होने के बाद। बट कोइंसिडेंटली कबीर सिंह वॉज माई फर्स्ट ऑडिशन इन बॉम्बे, जो आया मुझे जब मैं वो शोज कर रहा था अलादीन के। एंड कबीर सिंह के ऑडिशन में आप इमीडिएटली पास हो गए? सर उस दिन तो पता नहीं चला था, बट इतना पता चला था दैट यू नो आई हैव गिवन अ गुड ऑडिशन। तो मैंने खुद को एक रेड वेलवेट केक से ट्रीट किया था। एक केक शॉप नीचे ही आता है, बट उसमें दे सर्व दीज रेड वेलवेट केक्स एंड ऑल दैट। आई ट्रीटेड माई सेल्फ विद दैट बिकॉज आई फेल्ट कि मैंने एक अच्छा ऑडिशन तो दिया है। और एकदम सिनेमैटिकली नहीं बोल रहा हूँ सर,
the day I was supposed to leave for Calcutta, क्योंकि मेरे shows over हो गए थे, I'm supposed to leave for the airport, and I was living in a place called Panvel, which is pretty far, pretty far from the heart of Bollywood. from the airport as well. So उधर ना network भी नहीं मिलता है ठीक तरीके से. The place where I was staying is a place called Koproli, so उधर network ज़्यादा नहीं मिलता है. So these casting associates were trying to reach me. तो एक आइडिया का फ़ोन था मेरे नाना जी का, उधर से मैंने फ़ोन किया कि यू गाइज वर कॉलिंग, व्हाट इज़ अप, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट टाइम इट वाज नॉट कॉल्ड कबीर सिंह, इट वाज कॉल्ड अर्जुन रेड्डीज रीमेक. सो यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फिल्म, द डायरेक्टर वुड वांट टू मीट यू. लाइक मुझे तो घर वापस जाना ही है बिकॉज आई हैव सम लिटिल बिट ऑफ वर्क देयर ऑल्सो, आप जब भी बोलो मैं आ जाऊँगा. So I went back to Calcutta. I was just about to leave, so I went back to Calcutta. But within 2 days, I came back. I met Sandeep sir, and things were finally. क्या बात है. I'm not at all making it cinematic for storytelling. नहीं, This is exactly what happened. आप कितने भी अच्छे एक्टर हैं, मेरे सामने एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है. Yes. सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, ये रोल कैसे मिला? अभी बॉम्बे में एक अच्छा चीज़ हो गया है कि हम जैसे एक्टर्स को ना हमेशा ऑडिशंस के थ्रू ही जाना पड़ता है. Yes, it's a tiring process, it's a testing process. And is it a demeaning process? Sometimes it is demeaning when somebody is coming up to you with a role which is not as good enough as your previous film. That feels a little demeaning in the sense that you should do your research well. Correct. Or maybe I have not done enough work for them too. But I think I have. मतलब अभी तो I feel like I have. But still, when they come up with roles which do not fit what I've done so far or something which challenges me further, then I feel bad. Otherwise, I'm absolutely okay in auditioning because I feel it's a very fair process. सबके लिए fair होना चाहिए. फेयरनेस होती है. मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज लाखों लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं जिनके आंखों में ये सपने हैं कि मैं भी एक दिन एक्टर बनूंगा. इतना फेयर होता है ये सिलेक्शन मुझे तो मिला ना सर. विदाउट रियली पुलिंग हाँ स्ट्रिंग्स. सर, मुझे किसी को पता नहीं था इस शहर में. आई डिड नॉट. सो व्हेन कबीर सिंह इन फैक्ट रिलीज, आई वाज सो अनअवेयर अबाउट बॉम्बे कि मुझे पता ही नहीं था एक फिल्म रिलीज के बाद कुछ करना भी पड़ता है. यू मस्ट बी नोइंग ऑल ऑफ इट कि उसके बाद भी कुछ करना पड़ता है कि इधर इधर जाके बोलना पड़ता है, वो पेपर वेपर में कुछ देना. मुझे कुछ घंटा पता नहीं था सर. सॉरी फॉर पार्डन माय फ्रेंच, बट कुछ भी नहीं पता था सर. तो मुझे लगा कि फिल्म रिलीज हो गया, फिल्म इतना बड़ा हिट भी हो गया, यही बहुत है ना. लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, करण जौहर टेक्स्ट कर रहा है. करण जौहर का मैसेज आया? सर आई मेट हिम आल्सो सर. आई हैड मेट हिम आफ्टर कबीर. लेकिन किसी फिल्म में साइन नहीं किया? नहीं अभी तक तो नहीं. होपफुली डेफिनेटली करेंगे सर. कोई किरदार आएगा तो डेफिनेटली वो करेंगे. वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं. ऐसा नहीं है वो सपोर्ट नहीं करते. ही वॉज द ओनली पर्सन हु took time out, and I remember you can ask your team members, I'm never late for any meeting or anything, but उस दिन yes, इस इंटरव्यू के लिए भी मुझसे पहले पहुंचे. ऐसा नहीं है. बट I'm never late for anything. उस दिन पता नहीं क्यों जुहू में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था और मैं 15 मिनट लेट पहुंचा. But he was kind enough to wait and give me even more time after that. We sat about for an hour after that, and he was very kind. And करण को टैलेंट की भी पहचान है, टैलेंट की कद्र खूब करते हैं. So hopefully yes. I mean, I'm waiting for that day when I work with him. Yeah. Yes. तो सजनी शिंदे का बता रहे थे. हाँ सर, सजनी शिंदे का ऑडिशन हुआ. एंटी कास्टिंग बोल के एक ग्रुप है, कास्टिंग एजेंसी है, वैभव सर का, जो ऑडिशंस लेते हैं. तो उसका ऑडिशन एक ही बार हुआ, मेरा एक ही राउंड हुआ. एंड देन निखिल सर मुझसे मिलना चाहे, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, एंड ही मेट मी एट द मैडॉक ऑफिस एंड ही टोल्ड मी दैट यू आर ऑन बोर्ड. And मैड के बाद मैडॉक. मैड के बाद मैडॉक. हाँ. Funnily enough, we were even going to a place called Maddox Square for the promotion of the. तो मैं बोला कि ये बहुत मैड हो रहा है अभी. Anyway, coming back to the process, तो I was one of the first people to get cast for. उस टाइम पे उस फिल्म का नाम था हैप्पी टीचर्स डे. हाँ. yes. तो अभी सजनी शिंदे का वायरल वीडियो हो गया है. तो हाँ, तो उस टाइम I was one of the first people to get cast for the film. And I got a lot of time to prepare for my character, which was coincidental, but मुझे बहुत अच्छा लगा वो preparation का time मिलके. And इतना range है character में, from a nice concern, जब आप सजनी को कहते नहीं तुम्हारा बर्थडे है, enjoy, ऐसा लगता है कि इतना fantastic boyfriend सबको होना चाहिए. And after that how you change colors and कैसे आप भागते हैं, कैसे आप very nice. Nikhil sir had told me, I mean, we discussed and jammed a lot on the character.
So Nikhil sir told me every man looking at this film or looking at this character should feel that we have done this thing by mistake also at times, you know. Mistakenly maybe we have done this. We don't realize how we have. But sometimes insidious patriarchy जो होता है वो बहुत dangerous होता है, more than patriarchy, where you do not realize, where people are posting maybe pseudo-feminist quotes on their Facebook profiles, but with their partners they are completely different. So a lot of it which was not there in the film, but we prepared for it, you know, so that once a situation or a scenario comes in the film, we just did not rehearse the scenes of the film, which is more endearing for me. You know, you prepare a thorough character. You put this character in various scenarios and you see how this person may react. Yeah. So Nikhil sir and I, we jammed on those a lot. And it's credit to him that he let me fly. And आप अपने आप को मेथड एक्टर मानेंगे या स्पॉन्टेनियस या मिक्स ऑफ बोथ? मिक्स ऑफ बोथ. हर एक फिल्म का अलग अलग प्रोसेस रहता है. अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ स्काई फोर्स बोल के, जो अक्षय कुमार जी के साथ है, एंड उसमें काफ़ी स्पॉन्टेनिटी का ज़रूरत है. ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न हाउ एयरफोर्स ऑफिसर बिहेव्स, दोज ट्रेनिंग इज देयर, but apart from that the scenes are very spontaneous with him and with other people in the film. So it depends, sir. Even before Skyforce I was working with Rajan DK sir on a show called Citadel, जो अमेरिका में भी बना है, इधर इंडियन इंस्टॉलमेंट में हम लोग हैं उसमें. So Rajan DK do not even believe in a lot of workshopping and all of that. They are very spontaneous in nature. So और मैजिक क्रिएट भी होता है उससे. You've seen their work and they're brilliant. And I mean, just to get to work with them was like a dream come true, because I've been following them from Go Goa Gone days, you know, 99 days actually. Yes. So it was a dream come true, and I saw their process up close. So they believe in a lot more spontaneity than preparation. Of course you prepare for your role as and how you want to, and but it's still there, that space of magic is still there, and we create on set only. और इस हफ्ते रिलीज होने जा रही प्लेटफॉर्म रिलीज है ऑफकोर्स पिप्पा. उसमें भी आप काम कर रहे हैं. बहुत ही बेहतरीन फिल्म है सर. आई फील आई शुडंट टॉक अबाउट माय फिल्म, बट it genuinely feels like a good film that Raja sir, who's one of the finest directors that we have, we've made this film. We shot this film back in 2021. It's been a while. It took some time to release this film because VFX का काफ़ी काम है, and it went back and forth with the edit, I'm sure. So now they have finally decided to release the film on the 10th of November. I'm fairly excited because it's my second film with Mrunal. We worked on Dhamaka, although we did not have too many scenes in Dhamaka together. I was majorly on a phone talking to Karthik. तो लोग बोलते थे मैं मिस्टर इंडिया हूँ धमाका का. तो anyway, but Mrunal is a very fine actor and a finer person. Like, she's a very kind soul, and her smile is a smile of generosity, and that sort of envelops a room. And you know, that energy is very much required when you are working with your co-actor. So it was wonderful to work with her. My entire track is with her. And धमाका का भी कसर आपने इसमें निकाल दिया. Exactly. We had to. Who wouldn't want to work with her, right? So yeah, I mean, through the course of the film, you also become friends, and I feel this film is important in its telling because it not only talks about the people who are the cavalry of the war, who fight the war as foot soldiers, but also people who work behind the scenes as people who decode certain messages, and those decoding is very important for you to get viable information to crack the code and crack the mission, you know. So we work as cryptographers who are working for the communication and analysis wing, which is now known as RAW. पहले CAW बोलते. Exactly, because it was made by Mr. R.N. Kao. So that's why, and it was just wonderful to be a part of that set, to be a part of that period, you know. And Raja sir is very precise about his design and everything. I remember once there was a lamp that was missing in a flurry of tables in a office, you know, that office space. A lamp was missing in about 100 tables, and he saw only that one lamp missing. And he was like, up and until that lamp is here, I'm not going to shoot. Wow. And that shot was not even about those lamps. It
It was a close-up of Mrunal and myself. It's in the background. It's in the background somewhere. It's not. You can easily cut it, you know, as you might know how we shoot films. So, but he was still very adamant about getting that first, and then we start rolling. अब जब आप मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, आपके बंगाली फिल्म के करियर का क्या हुआ, या अभी भी आते जाते रहते हैं? हाँ सर, मैं अभी इट्स अ 2.5 hour फ्लाइट सर. मुझे ऐसा लगता है कहानी कहीं से भी हो, आई वॉन्ट टू वर्क इन तेलुगु फिल्म्स ऑल्सो समडे बिकॉज आई सी सो मच प्रॉमिस देयर. इफ आई कैन एवर लर्न द लैंग्वेज आई वुड वॉन्ट टू वर्क. आई वुड वॉन्ट टू वर्क इन मलयालम फिल्म्स. देयर सो मेनी गुड स्टोरीज बीइंग टोल्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. आई डोंट थिंक हम लोगों को ब्रैकेट करना चाहिए किसी को भी इन टूडेज डे बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज वो आप सीख सकते हो इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट, इफ़ यू जेन्युइनली हैव some amount of talent for the thing. I'm sure you can do it. So Bengali films भी मैं करता हूँ because Bengali stories बहुत अच्छे होते हैं. You don't want to miss out on that. But yes, it's been a while that I've done a Bengali film. But interestingly enough, I have done a one-shot film, which is completely like it's a 2-hour film. One shot entirely. I mean, I wouldn't want to say, but in your show I'm saying it only has 3 invisible cuts. But apart from that, it's a one-shot film. It's in Bengali. कितने किरदार हैं उसमें? कितने actors? Around 15 characters. 3 main characters which are being played by myself and 2 other people, and other characters but all of them are protagonists in their own way because the story just does not revolve around these 3 guys. It's sort of the camera shifts from one character to the other, and how it's a story about one night, and we sort of completely took one locality and transformed that into a character. क्या है फिल्म का नाम? So it's called Gopone Mod Charan. It's not so Gopone Mod Charan is an advertisement that you give in Bengal once you have to leave alcoholism, so to speak. But the film is not about that. The film is about completely something else, about certain events. Metaphorical title, which it's a story about one night as to what happens in those nights, as events after events after events. It's a very fun film, and we surely have made a good film, I feel. कब रिलीज होगी? Hopefully very soon, sir. We are trying for either a platform or a very limited because it's an experimental film, sir. There are not a lot of takers for experimental films, as you would know. But hopefully it will come into the theaters and people can watch it, and after that hopefully in a platform. I'll surely send you a link. Yes, please do. सोहम, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, एंड इस तरह का काम करते रहिए, बेहतरीन काम करते रहिए. मे यू शाइन एंड मे यू conquer the sky. That is all I can say, because you're a wonderful actor. Thank you so much, sir. And it's genuinely, I just want to take this time out and say thank you so much to you, because you don't know what this means to me. I mean, just to be sitting opposite you, because as I said earlier, I don't want to make you feel old, but I've genuinely grown up watching your shows, whether it was for another channel and whatever you do now, and your kind words only help us cherish our lives further. Thank you. जो मैंने आपको कहा, मैं ऑडियंस को भी बता दूं, ताकि ये लोग नहीं समझे कि मैं बहुत एजेड हूं. He has been watching me from ever since he has been growing up. मेरी उम्र 16 साल है. ये कह रहे हैं कि मैं तो अभी जन्मा ही नहीं. इसी नोट पर हम आपको जाने देंगे. दैट वाज सोहम मजुमदार. अगर आपने सजनी शिंदे का वायरल वीडियो नहीं देखी है, इनके काम के लिए तो ऑफ कोर्स फिल्म भी बेहतरीन है, लेकिन इनके काम के लिए ज़रूर देखिएगा. और ऑफ कोर्स पिपा तो रिलीज हो ही रही है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप वॉचिंग कोमल नाटा ऑफिशियल. थैंक यू.